But how did writing a blog ended up you starting a company on it? One day I got a package at my home. So when I opened it, उसमें उसी बंदे के डॉक्यूमेंट्स थे. Anxiety is a big issue when you are applying for a visa. Then how do you influence them कि यात्रा या MMT को ऐसा क्या जरूरत है? लोग पासपोर्ट के बाजू में बैठ के चाय पी रहे हैं, विच इज़ दी डेंजरस थिंग. अगर एक ड्रॉप भी गिर गया तो पासपोर्ट इज कंसिडर्ड एज डैमेज. सो दिस इज़ अ प्योर इंडियन प्रॉब्लम, नॉट जस्ट इंडियन एशियन प्रॉब्लम. एंड ऑनेस्टली जितना मैंने ट्रैवल से बात किया, नो वन लाइक्स टू अप्लाई फॉर वीज़ा. Everyone likes to plan the trip. This is the one of the major reason, and of course, what is your purpose, why you are going there. Now we understood what should be the flow, and let us launch the first cut of the product, and then COVID happened. Asia में there are only 6 countries who are in the top 50. Hey guys, welcome to the show. Today I have a very close friend who is also a फर्जी engineer like me. Engineering का कुछ लेना देना नहीं है. But like a lot of us, he's done engineering. How do I know him? I know him for close to 5-7 years, 5-6 years now. We have worked together at Cred. Now he's a founder of his own company. He's also done an entrepreneurial journey before that. In the food industry, he was running his own food, I would say, restaurant. Yeah. And after that, he moved into a very, very different thing where he started something around travel, visa, international travel. So the idea was to understand कि भाई, how do we travel internationally, क्या problems हैं, how do we think about it, how does the industry solve it. So yeah, welcome to the show, Rahul. Thank you, thanks Sid. One of the things which we should talk about is obviously, am I the sole person who feels like that या फिर सब जनता को ऐसा feel होता है. But before that, look, the idea is कि not a lot of people think about starting up in this segment. Yeah. What first of all made you start? Inception कैसे हुआ? And I know कि Cred से पहले you had started this. Yeah. Then you worked at Cred for some time. You were part of product there on a module called Cred Pay, which by the way I'm really a big fan of. So great guys done by great work done by guys like you. बट दी आइडिया वॉज टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पहले कर रहे थे, फिर देन यू टुक अ ब्रेक, तब भी चल रहा था या नहीं चल रहा था. सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट ऑल्सो फ्रॉम योर पिवट फ्रॉम अ फूड इंडस्ट्री टू अ ट्रैवल इंडस्ट्री. तो बताओ यार थोड़ा सा क्या चल रहा है. If I specifically talk about how visa and happened, so this is a personal story, and see, we all want to do one family holiday, right? सब लोग लगता है कि हाँ ये साथ में मिलके घूमने जाते हैं. सो माई ब्रदर स्टेज इन US. हम जब छोटे थे तब एक फैमिली हॉलीडे किया था गोवा. उसके बाद कभी नहीं किया बिकॉज वी आर ऑलवेज हियर एंड देयर, नो बडी वर स्टेइंग टुगेदर. एंड सो वी डिसाइडेड नाउ वी विल डू one big family holiday, must 20-25 days, and we'll stay together. It was a highly anticipated holiday because Australia was the destination. A very die-hard cricket fan, and whoever is a cricket fan, they are also a fan of Australian grounds. Australian grounds, I just love Australian grounds, and we used to see this amazing Sydney cricket ground, Melbourne cricket ground. आपको याद हो सुबह 5 बजे उठ के मैच देखना पड़ता था, फिर भी उठते थे नहीं, ये देखना है बहुत. एंड पगले हैं ना हम सब लोग क्रिकेट के लिए. एंड दैट साउंड ऑफ क्लैप, राइट, द जेंटलमैन क्लैप, वो भी मज़ा आता था. सो या वेरी हाईली एंटिसिपेटेड हॉलीडे. एंड so my father outsourced the visa process to some local agent. I don't know who and how, but they just outsourced, and I was completely unaware about what's been happening. Yeah, I mean, as few days went, I got a call from Australian embassy, and they started asking me some questions, which were personal questions. I answered them correctly, but unfortunately, I got a rejection letter after 2-3 days, and the reason was information mismatch. It means what I provided on the phone call and what has been written in the application form differs. So yeah, I went nuts. I started calling that agent. I went to his office. I interrogated him, and there I understood कि he said, sir, हम नहीं करते वीज़ा, कोई और करता है. And there I understood there is a specific people or specific company who's dedicated to do this sort of work. So I went to that agent, and as I entered into his office,
I saw papers were lying here and there. लोग पासपोर्ट के बाजू में बैठ के चाय पी रहे हैं, which is the dangerous thing. अगर एक ड्रॉप भी गिर गया तो पासपोर्ट इज कंसिडर्ड एज डैमेज. हाँ मतलब हम जिस तरीके से पासपोर्ट को एकदम होलियर देन दाउ ट्रीट करते हैं, लॉकर में रखते हैं हम तो यार. मतलब मेरा पासपोर्ट तो ऑफकोर्स लॉकर में ही है. सब लोग बहुत संभाल के रखते हैं. तो मतलब दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ योर लाइफ ऑफ कोर्स. एंड बाहर के कंट्री में तो आधार से ज़्यादा पासपोर्ट का ही मैटर करता है. तो या आई मीन आई वॉज क्रेजी. ये कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है. एंड somehow I managed to pull my application form and I saw the copy of it. Spelling mistake थे, किसी ने हाथ से बेवकूफ़े से उसको फिल किया था, प्रोफेशन रॉन्ग लिखा था, मल्टीपल मिस्टेक्स थे. एंड ऑफकोर्स ऐसा लिखे तो ऑफकोर्स इट वॉज बाउंड टू गेट रिजेक्ट. सो yeah. But you were rejected or some other family members were also? No, my father and my father mother they got accepted. Even my brother का visa also got accepted because he applied from US. But सिर्फ मेरा वीज़ा में ऐसे प्रॉब्लम हुआ. So and generally when a family is traveling together and there was also cricketing event was happening at that time. We also had match tickets. अच्छा वो बॉक्सिंग डे टेस्ट टाइप उस वाले टाइम पे जा रहे थे क्या? हाँ तो मतलब वो तो पैसा गया. मतलब so you guys didn't end up traveling at all? ऐसा No, never. And you know what? We still haven't done that travel. क्योंकि वो जिस टाइम पे ट्रैवल वो प्लान होता है उस टाइम वो हो जाता है. इट्स लाइक अ गोवा, राइट? ट्रैवल इज लाइक अ गोवा के हो जाए तो हो जाता है. और आपने प्लान किया तो बस एग्जीक्यूट कर दो. जितना ज़्यादा सोचते बैठोगे तो वो नहीं होगा. True. Right? And that's what happened with us. Yeah, then out of frustration, basically I started a blog called Stamp My Visa, and that's how the journey happened. The intention behind that nobody should go through this sort of experience, because we end up losing around 4.5 lakh rupees in the cancellation charges because our hotels were confirmed. Of course, match ticket का तो refund होता नहीं है. So local flights were booked. So yeah, I mean everything got missed, and that's how I thought that this is the problem to So you started a blog called Stamp My Visa, and by Yeah. the way, for everybody's reference, obviously he's founder of this company now, which is called stampmyvisa.com. And so you started writing a lot about it, like frequently. Yeah, just started gathering information. Of course, I was also not the subject matter expert or the best person to say, but at least I could gather the relevant information and at least make people aware about it. That was the intention behind starting that blog, and used to collate information from the right sources. I also used to talk with people who have traveled international, do's and don'ts and all this stuff I used to put there. And then Quora, I saw Quora, people were asking questions, I used to answer there. So that's how this connection built. So you became regular with the entire visa application. I'm sure लिखते वक्त you would have researched a lot. Yeah. एक तो personal issue आया, event हुआ, तो then you went there, saw a lot of things which were not done right, and then that frustration led you to write a lot. But how did writing a blog ended up you starting a company on it? Yeah, it's a very interesting story. I mean, one day someone from Bangalore just pinged me out of nowhere, and he said, I follow you. I saw some of the things you have put. So I have a personal problem. I'm just getting married and there is a honeymoon planned for Singapore. I stay in Bangalore, and here people are saying you have to apply from your home jurisdiction. So Singapore works on a jurisdiction basis. Where is your passport issued from? You have to apply from there, provided you have a local address proof over there. So that guy didn't have that. So he said, can you help me out? So yeah, I explained the process. These are document charges and what to do in that. So he said fine. He said आपका ऑफिस एड्रेस क्या है? तो देयर वाज नो ऑफिस. ब्लॉक का ऑफिस क्या होता है? सो आई गेव हिम माई होम एड्रेस. हाँ ये है, ठीक है, आई विल गेट बैक. सो 3-4 दिन गए एंड मैं भूल चुका था वो चीज़ को. वन डे आई गॉट अ पैकेज एट माई होम. सो व्हेन आई ओपनड इट, उसमें उसी बंदे के डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट थे, एंड मतलब मैं तो I was furious how the hell this guy can send the most important document of his life to a stranger. So I called him कि bro ये तूने ही भेजा ना, राइट? अरे हाँ मैं आपको ना बताना भूल गया, मैं
मेरी शादी के प्रिपरेशन में बहुत बिजी था. वो मैं आपने बोला था ना वो कर दो ना, वो जो आपने बताया था ना वो आप कर देना, और क्या पैसे वगैरह बता दो मैं पे कर दूंगा. मैंने कहा ठीक है. So I took his documents, applied his visa, kept him updated what's been happening. So sent back his passport along with the visa, and he was so happy. कि एक stranger पे trust किया and वो सच निकला, and he wrote a pretty nice review for me. I still remember he paid him with the money, and yeah, that's how. This was what year? This is around 2017, अच्छा. and yeah, that's how the first validation I got कि हाँ इसमें pain point तो है कि how someone can trust a stranger, a blog. मतलब इतना ज़्यादा पेन पॉइंट है कि कोई भी हेल्प दिख रही है, पीपल आर क्लिंगिंग ऑन टू इट. Yeah. ऑल्सो सेंडिंग देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू देम कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, लाइक आई एम जस्ट होपिंग कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, भाई आप कर दो, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्लीज कर दो. एंड ऑब्वियसली यू वर नाइस इनफ टू डू दैट, बट यू डिड दैट वंस एंड देन, लाइक माई पॉइंट इज लुक टू डू, किसी का हेल्प करना और कंपनी चालू करना, उसमें भी हम बोलते हैं PMF मिल गया, यूर अ प्रोडक्ट गाय, यू अंडरस्टैंड दैट. आई अंडरस्टैंड कि मतलब एक बार किसी ने भेजा, उसका काम करवा दिया, वो बहुत खुश हो गया, उसने एक टेस्टिमोनियल लिख दिया आपके लिए, पैसे भी दे दिए. तो दैट मीन्स द सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग इज नॉट जस्ट डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, बट अ decent, large delta created in somebody's life that they're paying money for that service. How did that translate into company? Like ये तो एक incident हुआ. Yeah. What did you do then to ensure that कि यार अब तो कंपनी चालू करनी पड़ेगी? Yeah, as we say in product management, कि don't jump to the conclusion immediately. Is this a large enough problem to solve? Exactly. So that was the next stage of this journey. So I thought let's not jump to the problem. I made multiple mistakes in the past, so I had that wisdom of not drawing the conclusion just by this one transaction. So Exactly. I went on a research journey. Let me see whether this is a big enough problem to solve or not. So I started visiting embassies where people used to stand in queue, बात करता था, took a small, I used to take them a small interview, questions में कहाँ से अप्लाई किया, क्या किया, इसमें क्या अच्छा नहीं लगा. Visited lot of travel agents, understood their pain points as well, visa agents कि कैसे वो काम करते हैं, what it happens, right? तो ऐसे जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है उनसे भी बात किया. तो ये सब बात करके समझ में आया कि हाँ there is a problem to solve, absolutely. And is it a large enough problem? I think yes, it is a large enough problem because such a highly growing country where travel is a big aspiration. Yeah, and this is a very solid problem to solve, and that's where I decided कि इसको. हाँ नहीं, sorry, complete. हाँ, that's where I decided that let's crack this problem. Again, I approached it very conservatively. I did not jump immediately to building a product. अब इसको बनाते हैं ऐसे करते. No, I even started with a basic MVP which was built on WhatsApp and email. That's it. Just to see what is there. I mean, क्या कौन से लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है. I mean, see, whenever we decide to build a product, we always take inspiration from here and there, and mostly from the West. We know the companies which are built by Western influence, but unfortunately या fortunately ऐसा कोई inspiration नहीं था. So this is a pure Indian problem, not just Indian, Asian problem. Yeah, any other country which is where the visa or the passport is not as strong. Yeah. Not from a perspective of anything else, but just your travel becomes I'll a give bit you one, more tough. Sorry, Yeah. Please go ahead. I'll give you one interesting stat on this. So there is a passport index called Henley's Passport Index. जी. Higher the index number, the stringent the visa application is, or the more countries the passport holder has to apply for visa. So जितना number उतना rating आपकी कम है. So Asia में there are only 6 countries who are in the top 50. बाकी rest of the countries are above 50. आप इंडिया का बताओ और फिर say for example let's compare that to Singapore and then probably we'll understand it better. See, Asia में only 6 countries who have a strong passport. Singapore, Japan, Israel हो गया, UAE and some more countries. India comes around 58, 60. China also comes around that.
These number of course based on the geopolitical situation and guidelines ये change होते रहता है. जैसे the recent news is even after if you are an Indian passport holder and you have a US visa, earlier you can take on arrival visa in UAE, but now you can't, right? So these guidelines are always changing. So that index number is also changing, but India is not in the top 50. So yeah. नहीं, got it, because I was also thinking while you were speaking about the fact कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली बात है, इफ़ यू जनरली टॉक टू एनी पर्सन, अच्छा क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज़ है, लाइक पीपल फ्रॉम चाइल्डहुड हम सुनते आ रहे हैं, अरे आई लव टू ट्रैवल, एंड गिवन दैट a lot more people are doing well in life than say some years ago, and I'm sure this number will keep increasing for India. पहले हम सोचते थे कि स्टेट में घूमते हैं कहीं, मोस्ट पीपल छुट्टी यूज टू बी देयर नानी दादी का घर एंड ऑल ऑफ दैट. या जैसे तूने बोला कि बचपन में एक दो बार गोवा गए तो ठीक है, हो गया. यू आर अ बॉम्बे किड born and brought up here, तो फॉर अ लॉट ऑफ मुंबईकर्स दैट वे गोवा इज लाइक द first exotic destination for most people, and that too also doesn't happen that frequently. I think like 30 years ago it didn't used to. Now frequency is much higher. I'm sure 30 years down the line it will be much higher for a lot of other international locations. But the more we are compounding in life, so to say, in terms of lifestyle, earning potential, blah blah, a lot of us then start thinking of international travels. And I think that's where your point is still valid कि बहुत सारी जनता को ये problem statement होगा. So this problem statement was big enough. So when did you start full time? As I told you, I started the first MVP was WhatsApp and email. So I used to get leads from Quora or some classified website, and while doing that, you know, see, there was no marketing budget or nothing. We never did any performance marketing also. But this type of business is strongly relied on word of mouth. And क्योंकि आप देखोगे कि we always ask for recommendation कि अरे तेरा कोई पहचान का है क्या, मैं उससे करता हूँ. मतलब it's not buying a biscuit कि यार same experience मिलेगा हर जगह पे. Everybody has in their own head their visa problem is a unique problem. Yeah. तो कौन curated अच्छा service दे पाएगा? हाँ, because everyone's profession is different, their country is different जहाँ पे वो apply कर रहे हैं, financial situation is different, right? Purpose is different. So yeah, I mean these are the problem. And word of mouth, we just thrived on word of mouth, and slowly then scale increased. Then the next version of our MVP was, you know, CRM. We started working on CRM then, and while happening, we are trying to figure out what should be the ideal flow and how to solve it at scale, right? Then CRM turned into no-code tools. I introduced no-code tools in the company and trying to automate certain things. And then the discovery was, now we understood what should be the flow, and let us launch the first cut of the product. And then COVID happened. So that was the break. Okay, got it. So which you just mentioned के credit से पहले भी आप वो कर रहे थे. So because this a very huge break was there. We all thought it's just a 21 day thing, right? And the 21 दिन की बात है, सिर्फ 21 दिन बंद रहेगा, उसके बाद open हो जाएगा. But it went till 21 months. And yeah, travel was the first industry which got affected and recovered the last. But it came back like crazy. हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, people revenge travel. Sorry? Revenge travel. हाँ, revenge travel. Yeah, मतलब जनता was like कि भाई अब अगर हम निकल आए हैं कोविड से तो अब तो ट्रैवल करना ही करना है. I think people who were traveling say less frequently also started doing more luxurious travels, by the way, and more often. I think like the frequency was much higher. People understood there more to life than just that is also there. That is also true. कि मतलब आप अगर सबके इंस्टाग्राम के बायो निकालोगे तो अगर किसी ने अपने ड्रीम लिस्ट डाली और फिर पूछोगे तेरा ड्रीम क्या है, तो आई वांट टू ट्रैवल 50 कंट्रीज 60 कंट्रीज ऐसा बोलते हैं सब लोग. बट nobody was acting on it. But COVID, I think, was just that push. Even if your bucket list doesn't talk about traveling as such,
your bucket list may also talk about a specific activity which might require you to travel. Like say for example मुझे लास वेगस जाके पोकर का टूर्नामेंट खेलना है, Yeah, तो उसके लिए भी तो इनहेरेंटली मुझे ट्रैवल तो करना ही है ना. सो आई थिंक correct. a lot of bucket list will generally have travel either as first order requirement और second order effect होगा उसका, जहाँ पे मुझे ट्रैवल करना ही पड़ेगा. सो आई थिंक Yeah, the purpose driven travel. Yeah. हाँ, तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो यू स्टार्टेड अगेन 2023, you said Yeah. April 17th. Yeah. And then you started with the same set of problem statements, like वही visa problem was the thing you guys were focusing on. Yeah, the underlying problem was the same, but the approach was completely different. Uh, the best thing happened with us was our whole team got together. सारे लोग वापस आ गए, and that was the best thing happened to us because all the people were from industry. So this is one of our strength that सबने ground में रगड़ के ऊपर आए हुए हैं, so they know the ground reality. So how big was the team, by the way, before you left and then everybody came back? Like how was it? So when we got shut down, we were around 25 people. When we started, around 7-8 log the. Cool. So then you started working on the visa problem again and all that. Yeah. So while now with all the wisdom and all the experience of scaling up the product, we started spending more time on the research and understanding the real user problem. And while discovering that, we understood that where is the Pareto, where is the real distribution lies, and that's where we discovered all the assisted travel section. So I called it assisted travel section. It means there are one type of traveler who want to plan everything on their own. I will go to this website, book hotel. I go to this website, I'll book flight from here, there, here and there, and plan it everything. And there is a other segment which is the large segment in India who want a concierge type of service. They want an assistance. So the assisted travel space is the biggest space over here. Almost 90% of the distribution lies with them. So here is the fact. India's travel industry, inbound, outbound मिला के, it's $170 billion. And can you guess the split? It's generally people say अरे ऑनलाइन तो बहुत बड़ा होगा. यार हमें ऑनलाइन की आदत है ना, तो हमें लगता है कि सब लोग ऑनलाइन अडॉप्ट कर रहे होंगे. एंड मतलब मेरे आंसर थोड़े से करेक्टेड हैं बिकॉज आई हैव स्पोकन टू यू अबाउट इट इन द पास्ट. बट आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन यू सेड कि प्रेडोमिनेंटली पीपल प्रेफर देयर एजेंट टू बुक दैट फॉर देम. The split is 90-10 and we just got to know कि हम wrong आई जगह थॉट पे. वो शायद 40-60 होगा कि मतलब 40% जनता, like for a lot of people who are young and are used to the entire digital economy, मतलब मुझे कुछ करना होगा तो मैं स्काई स्कैनर पे जाऊंगा, मेक माई ट्रिप पे जाऊंगा, यात्रा पे जाऊंगा, कुछ चेक करूंगा, कहाँ से बुक करना है, क्रेड पे जाऊंगा. क्रेड पे एटलीस्ट होटल्स एंड ट्रैवल का तो काफ़ी अच्छा सेटअप है, बट एटलीस्ट फ्लाइट्स के लिए मैं ये बाकी वेबसाइट्स पे जाके चेक करूंगा. स्काई स्कैनर ऑल्सो गिव्स यू लाइक एन एग्रीगेटर व्यू ऑफ अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स. फिर मैं वहाँ से बुक करूंगा. आई थॉट काफ़ी सारी जनता होगी मेरी तरह जो इस तरीके से अप्रोच करती होगी, बिकॉज यू ऑल्सो सी नॉट योर सेल्फ बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स अराउंड यू हु हैव सिमिलर बिहेवियर. बट वो बाद में समझ में आता है कि यार वो दोस्त ही वो लोग बनते हैं जो सिमिलर बिहेवियर बन या तो होता है उनका, या बाद में सेम सिमिलर बिहेवियर बन जाता है. यू आर एवरेज ऑफ 5-10 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद वाला पॉइंट जो है. बट आई वाज सरप्राइज्ड कि a lot of people are dependent on their See, online agents. online booking is highly dominated by flight booking, True. right? And we thought flight booking सब online हो रहा है, मतलब सभी ही online हो रहा है. See, those guys are also doing booking online only, but they are assisting someone. Now you have worked in a corporate company, bank, there is a travel desk, right? तो वो क्यों है? तो सब तो कर सकते हैं ना online book. Why there is a travel desk? Because they just formulate everything, the complete trip for the individual, right? That's business use case. Even suppose if you're sending a parents to X country, of course you want it end to end, right? पूरा सब कुछ करके दे. Okay, got it. So are you saying that most people then who are traveling from India internationally, 90% of them are then dependent on their local agent to actually do that for them? Yeah.
So you guys work with the agents, like how does it happen? So one of the questions I had Yeah. in mind was with stampmyvisa.com, obviously an individual can approach, Yeah. but then you're approaching these set of agents who work with you, or does जो agents का footfall है वो आप लोगों के साथ काम करके then you guys assist the agents to do it. What's the business model like? Yeah. So we have different type of cohorts in the Stamp My Visa. One is which we just talking about travel agent. I'll address that first. So yeah, I mean, see, travel agent is their main job is to sell, right? Their main job is to fulfill the requirements of the traveler, understanding the requirement and making the booking happen, right, at the right price and everything. But Visa is an after sales, and we both can sell a holiday package to 50 people, but we can't do their after sales, which is Visa. We need more manpower. Now a small travel agent or that shop, Okay. they can't accommodate or they don't have that budget to keep that. That's what happens with bigger companies also, right? Customer support call center को outsource किया जाता है. This space is not a cool space, and that's why there are very few people who are solving for it. So there we come into picture. They take our help. So we have a product. They log into it, just put their order over there, and that from there we just take it forward and help them to. तो मुझे एक एग्जांपल समझाना कि से फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ इज ट्रैवलिंग टू से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड बाय द वे आई हैव गॉन थ्रू दिस ग्राइंड विद यू, Yeah. very very lovely experience. What happens at the back end, like तो मेरे से जितना डेटा है, and I'm sure you guys will speak to me. No, so first let's talk about, you're talking about the agent experience. Yeah. So I might have an agent, I approach them, और मैं उस एजेंट से बात करता हूँ, चाहे वो मुझसे मिलने आता है या मैं उससे मिलने जाता हूँ. मैंने बोला भाई मुझे तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उसने बोला दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ चेकलिस्ट Yeah. विच दे विल आस्क मी कि भाई ये दे दो ये दे दो ये दे दो करके उन्होंने 10-15 डॉक्यूमेंट मांग लिए. नाउ वंस देव कलेक्टेड द डॉक्यूमेंट्स, दे नो मेरी ये टेंटेटिव डेट्स हैं ट्रैवल करने की, मैं ऐसे ट्रैवल करना चाहता हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन आ गया. नाउ व्हाट हैपेंस? So I'll talk about the checklist first. They have to be very sure that वो right checklist बता रहे हैं, क्योंकि checklist change भी हो सकती है, right? Okay. Also purpose क्या है, profession क्या है, उससे भी checklist change होती है. So there is a general exhaustive checklist you will find on website, but what is the exact requirement checklist based on that individual is different. So we have a portal जहाँ पे they just log in and see that checklist first, and तो वो मेरे डिटेल डाल के yeah they your share it with portal the end traveler. checklist generate करेगी which they can share, and then as a Yeah, person exactly. who's a traveler, then I can then Start give it. arranging those documents. ठीक है. तो अब मान लो उसके तो पोर्टल यूज किया एक एजेंट ने, तो मान लो एक एजेंट है भाई ऋषि करके, अब उसने मुझे बोला सर आप बताओ कहाँ ट्रैवल करना है, बात हो गई, तो ऋषि वुड बी देन यूजिंग स्टैम्प माई वीजा एज अ पोर्टल, एंड उसके बेसिस पर पता चलेगा अच्छा सिड है, यहाँ काम करता है, इतने साल का है, मैरिड है, ब्ला ब्ला ब्ला, और शायद कौन सी कंट्रीज घूम चुका है, 25 चीज़ें हो सकती हैं. Yeah. उसके बेसिस पे फाइनल एक लिस्ट ऑफ क्लियर चेकलिस्ट निकल के आएगी जो ये मुझे देगा, एंड देन उसके बेसिस पे देन आई गिव हिम those documents. Yeah. So now that person has received my documents. Then what happens? Yeah, either that individual has already processed the visa through the same agent and through Stamp My Visa. So there can be a saved documents of that individual. So उतना और काम कम हो जाएगा. तो If not, तू ये मान लेना मैं पहली बार अप्रोच हाँ कर वही बोल रहा हूँ. So if not, then they just give all the documents to agent. That can be any form. They can WhatsApp him, or we also have a B2B2C flow where they can upload the documents. We receive documents now. See why people don't want to do visa is it's a painful process, it's a tedious process. Form filling कौन दिमाग लगाएगा, everything क्या चाहिए बता दे मैं दे देता हूँ. ब्लैक होल है ना यार, पता ही नहीं है ना करना क्या है. So form filling is also a pain point. So we don't ask anyone to fill the form. Now they just upload documents, we fetch all the data. So Stamp My Visa our platform has analyzed all the countries' visa application questions and bucketed into multiple categories. And based on the requirement, we only ask those questions. So we just reduce the questions as well. Like for example, in Australia, you have to ask a lot of questions.
But if you are getting that data through the document, why are you even asking that if you have the document? So we just shrink the form, and only the questions which जिसका answer is required from the user, we ask those questions, and that's how the form filling seamlessly get completed. नहीं, बट इसमें एक डिस्कनेक्ट आ रहा है. वी तो पॉइंट ही नहीं है ना. मैं तो नहीं जानता ना स्टैम्प माई वीज़ा को. मैं तो ऋषि प्राइवेट लिमिटेड को जानता हूँ, जिसके प्रोपराइटर ऋषि साहब आ गए मेरे पास और उनसे मेरी बात हो गई. अब उसने पीछे बैकएंड पे तेरा टेक यूज़ कर लिया, उसके बेसिस पे मुझे एक चेकलिस्ट शेयर कर दिया. नाउ व्हाट यू सेइंग इज चेकलिस्ट में हार्ड कॉपी, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हार्ड कॉपी में भी शेयर कर सकता हूँ, सॉफ्ट कॉपी में ईमेल कर सकता हूँ, या व्हाट्सएप भी शेयर कर सकता हूँ. अब उसके पास वो सॉफ्ट कॉपी जब बन गई तो उसको फिर वो will with the help of your portal they will upload that. Yeah. ऐसा होगा. Yeah, they have to upload the documents. तो अपलोड in कर that दिया. particular order. अब उसके बाद क्या हुआ? So Upload. then will you apply for visa, like Stamp My Visa will apply for visa, or the agent will have to apply, or No, somebody else? There is a proper team is behind all these things, and there is a proper processes has been set to fulfill that. Agent on customer has nothing to do with. They only have to provide the documents. They don't have to fill the form. They don't even have to write a name of the traveler, right? When you book a flight, you write your name, right? This is my entire name, given name, surname. Here you don't even have, तो have to डॉक्यूमेंट write से that. फेच करके तुम Exactly. So we create the document. We classify the document. We also map the documents against the traveler. Suppose you are a travel agent and you're booking a group of 50 people to X country. How are you going to manage that 50 people, right? Here you just ये तो अलग ही प्रॉब्लम स्टेट. हाँ, so you just have to dump the documents, and we will just readily create everything for you to work upon. And there is a team assigned who just picked it up. There is a product. The backend product is the biggest product, which is not visible to anyone. The internal product is the IP which we have built, and that just takes care of everything. तो अब then you will process visa as you said. Yeah. And वीज़ा प्रोसेस होगा तो और फीस वगैरह वो आप डायरेक्टली Everything is mentioned on the portal. They can they will make a payment, pay you will it, process yeah, everything yeah. at We the have back end. a wallet over there. They can just pay through it. Second is the corporate travel. Of course, there are few corporate companies who are also pissed off from their existing process, and they have a business travel requirement. They uses our portal, and that's how they process their visa through that. That's a simple, straightforward transaction over there. Third is MICE travel. Very few people know about MICE. MICE stands for Meetings, Incentive, Conferences, Exhibition. It's a very upcoming segment in travel where a group of you've been in Yes Bank, right? Yes Bank also must be selling multiple things, and there must be targets for maybe for salesperson, and the reward for that target will be some trip Some travel. to X country, right? And whoever is eligible for that country, now there can be 200, 300, 400 people, and there must be a kind of offsite must be happening. So meetings will happen there. This is an incentive which they are going. There can be a conference, right? Or there can be an exhibition where a team is traveling to attend that exhibition, right? So this is a very upcoming segment where a group travel is happening. 200, पर ये 300, यूज केस 500. ही ये यूज केस ही हुआ ना कॉर्पोरेट ट्रैवल का एक तरीके से. Yes, use मतलब case. इट्स अ सब यूज केस ऑफ कॉर्पोरेट ट्रैवल. Yeah, and उसमें भी और एक interesting use case है, like recently we did a paints company group which was taking their dealers network to Australia. And I mean, this is not a company employee, but still it's a different type of use case. मैं ये बात समझ गया कि if there is an employee of the corporate who is planning to travel, so there is a travel desk arrangement which is managed services, give or say, and then there could be a lot of people for specific use cases who might want to travel. They might be employees, they might not be employees, like dealers, distributors. Yeah. बहुत सारी जनता डीलर्स के लिए बहुत कुछ करती है. Yeah. I think every large manufacturer generally does some sort of incentive program Correct. for their dealers. It's not just the money, Yeah. but it's also to do with a lot of different incentives which are made. तो उनके लिए भी हो गया. But
predominantly it's a portal play for the agents and corporate. Yeah. Consumers can't reach out to you like that initial banda who wrote to you from Bangalore. अब वैसी जनता नहीं reach out करेगी. No, so we have completely pivoted to enterprise side because we see a lot of potential over there. As I address the fourth cohort, which is OTA, so it's not just platform for everyone. Now the next product which we are bringing is the API product. Now see, there are a lot of APIs in travel. Flight has APIs, hotels, bus has APIs now, train has APIs. But what about visa? There are no APIs, right? So OTAs want these sort of solutions, so they can just integrate with us, and things will get solved for them. They don't even have to build an internal team for that. नहीं बट क्या यूज केस से समझा ना क्या ऐसा वो मतलब से फॉर एग्जांपल यात्रा या एमएमटी को ऐसा क्या जरूरत है विच यू विल सॉल्व. See again, these are also travel agent only. It's just that they're online travel agent. प्लस एग्रीगेटर एक तरीके से सर्विसेज के. Right. And they are also selling multiple services in terms of travel. I mean, they have offline franchises, they have their online packages, they have holiday department. So once they sell it, they also require a visa. Now again, they have to set up a very large team to solve for this. And predominantly I said this is after sales thing. It comes after the sales. Companies want to invest in sales, not in the after sales, and that's why they look for a better partner who can just fulfill that requirement. So you guys are already in talks with couple of OTAs that way? We already working with most of the biggest OTAs in the country. Oh, very nice, very nice. So effectively you're then solving for OTA partnerships which are also give or take. So मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, एक तो corporate के साथ बात कर रहे हो आप, एक agents के साथ काम कर रहे हो. Individual agents can use your portal to probably make their life easier. And agents customer से बात कर रहे हैं. Yeah. और कुछ लोग हैं which is like your Yatra MMTs of the world who are aggregator agents, let's say. Yeah. क्योंकि देखो agent का काम is primarily to engage with the customer and then bring them, like bringing in the footfall, and then help them do a lot of activities. तो ये flight booking वगैरह हो गया, and for both of them, be it an individual agent or aggregator services like Yatra MMT, they can then use your portal or APIs to do a better job as well as also offer services which are not core to what they were talking about, which is an after sales service. And the other part is obviously a corporate can directly approach you कि भाई you do that. But मुझे एक बात बता कि why would a corporate not approach a Yatra MMT and come to you? Like corporate has a travel desk set up within their company, and the travel desk guy manages everything, right? And visa is one of the most important thing for them because flight bookings and everything can be done from anywhere. So they want a end supplier directly to coordinate with. They want a very deeper service. They also want, not every visa is online. Visa is also, you have to submit, and in different territories you have to submit based on where your passport is issued from and where you are traveling. So they need a player who is present everywhere and can help you out end to end, right? If the executive of the company is traveling, suppose CEO of the company is traveling somewhere, even CEO also has to go for entry or go for submission. Then there is a concierge service also we have. Suppose if someone booking a Europe visa through us, so we always have a person stationed at the end of the center where we receive them and just help them to complete the visa application submission. So it's a complete journey which we have covered. The online platform which you are talking about is, I don't think they have solved for it right now, and it's a specialized service which we have built. And one more point I want to add into this. Flights, hotels, even bus booking, these are all commodities. I mean, you can book from any website or any app. It's not gonna make any difference in the end service. मतलब मैं ये वेबसाइट से बुक किया, इसके लिए
मेरे एयर इंडिया के सीट्स लाल हो जाएंगे ऐसे नहीं होने वाला है, राइट. बट जो वीज़ा है, इट इज़ अ कंप्लीट एक्सपीरियंस. इट रियली मैटर्स फ्रॉम वेयर you apply and who's exactly the executing your application process. Now lot of people say कि मैं खुद भी कर सकता हूँ. अगर कोई एम्बेसी, आपको अपॉइंटमेंट ही अगर दिल्ली की मिले, आप बॉम्बे के हो और आप खुद को सबमिट करने जाना पड़ रहा है, उससे बेटर ये नहीं कि मैं आउटसोर्स कर दूँ और जाके मेरे भी यहाँ पे कोई कर दे. So yeah, I mean, for example, we have a lot of clients from Tamil Nadu, and they have a Turkey. Lot of people travel to Turkey from there. But their application gets submitted in Bombay. Now, are they going to travel? Everyone gonna travel to Bombay? No, it's very costly. So our client just courier document to us. We have a fulfillment center in Bombay, and we just get the job done and send back passport along with the visa. But tell me, this is like a common question. I think a lot of people also speak about or generally hear about a lot of their friends probably traveling to US or Europe, where a lot of times you have an interview also Yeah. as part of the visa. And I think we were just discussing this also. Ki, how many countries generally have like a very flawless visa application process जहाँ पे आप उनके एक पोर्टल पे अपलोड कर देते हो एंड देन दे प्रोसेस कि भाई हाँ ना, लाइक इफेक्टिवली इज जस्ट लुकिंग एट डेटा somebody and then taking a decision, will they allow you to enter their country or not? Effectively visa Yeah. is that only. Yeah. Visa is a permission to enter my country. Correct. By that government. How many countries generally go through this process of interview? US is one, but is it predominant in other countries also? No, How is it? US, for Indian travelers, US is the only country which calls for a physical presence of a traveler. Only in exceptional cases, few European embassies may call, or any other embassy may call for the end traveler if they find anything. So now you can apply for a Schengen visa, which is the Eurozone visa, give or take. मतलब उसके लिए भी ऑनलाइन हो सकता है विदाउट. Yeah, it is coming. You know, within couple of years, this thing is going to go online. The बट complete. अभी ऑनलाइन अभी नहीं, अभी you have to submit the passport. You have to go through their visa application center. ओके, गॉट इट, गॉट इट. एंड ये भी इंट्रीगिंग था कि पीपल फ्रॉम से तमिलनाडु, यू स्पेसिफिकली स्पोक अबाउट, वहाँ की जनता टर्की जा रही है. लाइक द क्वेश्चन आई हैव इज प्रॉब्ली देयर इज अ रीजन टू इट, आई डोंट अंडरस्टैंड इट. आई नो फॉर अ फैक्ट कि फॉर सम टाइम आई हैव लिव्ड इन सिंगापुर, तो a lot of South Indian states folks would, like Tamil and all those people, are extensive travelers to Singapore also. Yeah, it's a third language in Singapore. Yeah, one of the 4 languages by the way. So there's Malay, Mandarin, Tamil and English. Correct. If I'm not wrong. Yeah. In Singapore. And Kerala में बहुत सारी जनता है who travels to Middle East. I think Yeah. UAE. Correct. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है. Generally Indian travel कहाँ करते हैं? In your experience, where are they traveling? And second question, what are the major purposes for a lot of travel? एक तो leisure travel हो गया, but you must be seeing a lot of purposes. So where do the Indians travel most and why do they travel there? See, the dominant use case for travel right now is the leisure only, right? Now, we are a new country in terms of exploring the territories, right? Now, you know, with the increment in the disposable income and wanting to, plus COVID also helps into that. So now we want to explore. So there are a lot of first time international travelers which are coming. Okay. Fun fact, we all talk about credit card growth in India. Passport issued growth is more than credit card growth. Oh, nice. Right. How many passports are issued in the country? Around 50 million passport issued in a year, I guess. I'm not sure about the exact number, but the growth rate is quite high as compared to. So a lot of people are now applying for their passport. Yeah. A lot of people are applying for the passport because now they know that one day I'm absolutely gonna travel. So Leisure is like a big reason of travel. yeah. I'm sure education is also one of the reasons which I can think of. Yeah. What are the other reasons why people travel? See, majorly is the leisure only. Okay. Okay.
and as mostly anyone who's traveling for the first time, they always try to go in Asian countries and predominantly Southeast Asian countries, which includes Singapore, Malaysia, Vietnam. Vietnam is also solid, massive inbound travel they are experiencing right now. Indonesia, UAE for that matter. So Sri Lanka. So these are the major dominating country who ये कॉस्ट के कारण है या सम अदर रीजन? यस, ये सबसे पहली चीज़ तो कॉस्ट के कारण ही है, ऐसा मुझे लगता है. हाँ मतलब यूएस कनाडा जाना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा ना बट सेकेंड रीज़न ये भी है कि इसका वीज़ा लेना इजी है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज और सो कॉल्ड. बट व्हाई डू यू से इजी? मतलब इजी easy in the sense there is a lot of hassle and the rejection rate is not that high, अच्छा right? So मेरा ट्रैवल कंफर्म है ना, तो फिर मैं ठीक है, मैं कर लूँगा. बट एक बात बताओ ना, जस्ट थिंकिंग, मतलब थोड़ा ऐसे मजाक वाली बात है, बट अ लॉट ऑफ पीपल कीप जोकिंग अबाउट इंडियंस ट्रैवलिंग टू थाईलैंड एंड ऑल, बट एंड ऑब्वियसली थाईलैंड हैज ऑन अराइवल वीजा. आर द नंबर ऑफ कंट्रीज विच आर गिविंग ऑन अराइवल वीजा ऑल्सो इंक्रीजिंग? It's not visa on arrival countries are increasing, the e-visa countries are increasing. That's how I can put it. The countries also want to invite Indian travelers, which are the second highest traveler outbound travelers in the world after फ्रॉम अ China. नंबर परस्पेक्टिव कितनी जनता आती है, इसलिए बोल रहा हूँ सेकेंड हाईएस्ट? हाँ, मतलब currently 34 million people travel internationally from India. एवरी ईयर? Yeah. Oh, that's a big number. Yeah? That's a big number. And it's not just a big number. Indian spends a lot also in travel, especially when it's a leisure travel. They're spending more than an average American and Australian as well, because uh, travel is like a shadi for us, right? Save, 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 and then boom. मतलब एक बच्चा अपने डैड को अगर जिद कर रहा है कि मुझे ये यहाँ पे लेके दो, अपने होम टाउन में शायद वो बोले नहीं चल घर पे चल, लेकिन वही बच्चा अगर ट्रैवल में कहीं बोले तो हाँ हाँ ले लेना, कोई बात नहीं, हम तो घूमने ही आए हुए हैं. देयर दैट फैमिली विल स्पेंड ऑन दैट. So you're saying on an average, an Indian family slash group Yeah. traveling abroad ends up spending much more than an average Westerner will, or their group will end up spending. या तो बट यू आर सेइंग कि साउथ ईस्ट एशिया एशिया में जनता ज़्यादा जाती है ट्रैवल करने, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं. तो यूरोप वगैरह जनता कितनी जनता जाती है? मतलब इज इट लाइक अ बिग नंबर, स्मॉल नंबर? 60% of the people travel to Southeast Asia, अच्छा, गॉट इट. right? And Europe is after. See, it's also about getting the confidence, right? Now I have traveled to international country, मुझे पता है, right? मैं वहाँ पे जाके इंग्लिश बोल के आया हूँ अभी, right? और वहाँ जाके अभी मुझे पता चल गया कि क्या करना होता है. And वो airport security and everything, I have answered to the immigration also, I have passed everything. I've been there, done that. Now अभी यूरोप क्या चीज़ है? Now they will attempt for US. Anxiety is a big issue when you are applying for a visa, and I think there are two stages to being anxious for a traveler, in my opinion. One is when you are applying, कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर दिया, वो ऑल ऑफ दैट. एंड वंस एप्लीकेशन हो गया है, वो इंटरव्यू होना था नहीं होना था अलग बात है, उसके बाद देन देयर इज अ वेटिंग गेम, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसी समय पता चल जा रहा है. देन देयर इज ऑल्सो एंग्जाइटी. हाउ वुड यू, what have you noticed in this entire process according to you at scale, and how can most people address such anxiety? सी एंजाइटी होने के कुछ रीजंस है. उसमें से मेजर रीजन इज द प्री बुकिंग विच दे हैव डन. दे हैव पेड a good amount of money upfront, and now a lot of, see, I'll give you a few examples. What is the behavior of independent travelers? How do they approach the travel? The very first thing people do, if we find the cheapest available flight, अरे ये डेट की ना, ये मंथ की यहाँ पे एकदम क्रेजी डील मिल रही है, हाँ अरे सब लोग बोलेंगे बुक कर लो, so they will book it. See, generally the cheapest flight is the non refundable flight, right? That वहाँ वो आ जाते हैं पहले. Then second, hotels पे आते हैं. So again, if you pay now, then this much the price. If you pay later,
this much the price. So platform plays the game over there, and many a times lot of people are confident कि हाँ यार मेरा वीज़ा तो हो ही जाएगा, उसमें क्या मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, ऐसा भी बहुत बार होता है, तो होटल्स बुक कर देते हैं. अब पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, नाउ दे कम टू वीज़ा. सो ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट ये चाहिए वो चाहिए. सबसे पहला चीज़ तो डिकोडिंग दैट चेकलिस्ट इज ऑल्सो वेरी हार्ड कि एग्जैक्टली क्या मांग रहे हो तुम. और उसमें दे हैव क्रिएटेड सेक्शंस फॉर रिटायर्ड दिस, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल दिस, फॉर स्टूडेंट दिस. There are some checklists which is overlapping also, so it gets confusing. It all happens when you yourself trying to apply for visa. And honestly जितना मैंने travel से बात किया, no one likes to apply for visa. Everyone likes to plan the trip. That's why they want to outsource the visa process. That's why the agent. वो तो planning a trip is giving you higher dopamine than Correct. actually going through the travel ना. Correct. Yeah. Planning में मज़ा बहुत आता है ना. या सो देन कौन सी कंट्री है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सपोज इट्स यूरोप, देन वहाँ पे इट्स नॉट 100% गारंटी दैट यू विल गेट अ वीज़ा. यू गो टू अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर. लॉट ऑफ पीपल कन्फ्यूजेस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर एज द they think they are the decision maker, which they are not. Their job is to just accept the application, nothing else. Visa application center, their job is to get the documents and courier or take it to the embassy, and they will take the decision. So people also Decision maker तो उस country का ही कोई बंदा होगा ना यार. exactly. यहाँ पे तो मतलब इट्स लाइक पासपोर्ट अप्लाई जैसे आपने किया. Yeah. क्योंकि ट्रैवल से पहले आप पासपोर्ट कर रहे हो, तो पासपोर्ट में मान लो TCS और somebody else is facilitating the entire process. Correct. बट वो आपको पासपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, चीज़ चेंज होगी नहीं होगी, वो तो एक IFS डिसाइड करेगा ना, या एक इंडियन सिविल सर्विसेज वाला बंदा या बंदी डिसाइड करेगी. वो लोग तो सिर्फ प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं. तो वैसे देखना इज लाइक अ वे. ओके. So as you have to take an appointment, as you enter the visa application center, then someone is basically taking your documents and verifying it whether you have attached all the correct documents. Then they will ask you, अरे ये नहीं डाला आपने, वो नहीं है आपके पास. Then the person will get confused. Lot of people get late for visa appointment also. फिर वो लेट होने की वजह से they have to buy the premium service. अगेन वहाँ पे पैसा एक्स्ट्रा स्पेंड हो जाता है. तो ऐसे मल्टीपल चीज़ों में उठा जाते हैं. इतना भी होता है कि अच्छा ये आपका फोटोग्राफ है, इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, नाउ वी कांट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन. एक तो ये चीज़ कब चेंज होगी यार. फोटो मतलब मुझे समझ नहीं था. पासपोर्ट साइज फोटो पहले एक ज़माने का समझ में आता था कि आप एक स्टैंडर्डाइज. या एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट फोटोग्राफ रिक्वायरमेंट. बैकग्राउंड का बड़ा नाटक होता है. ये कलर का बैकग्राउंड है, वाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, ये भी होता है ना. या अनदर सेम एग्जांपल ऑन द सिमिलर लाइंस आई विल गिव यू. ट्रैवल इंश्योरेंस के कुछ कंट्रीज़ में ये भी होता है कि आपके ट्रैवल ख़त्म होने के बाद भी नेक्स्ट 10 days तक आपका इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए. दैट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रैवल इंश्योरेंस. कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं 13 को जा रहा हूँ और 18 को वापस आ रहा हूँ, तो 13 से 18 मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस खत्म. बट नो, एवरी कंट्री हैज़ अ different requirement. But does your portal also talk about these specific things to the agent? Yeah, absolutely. So we do see one of the job of Stamp My Visa is also to do the proper QC of the documents, right? So we have built a system which just do the quality check of the documents. By quality check I mean whether these whether these documents are fit enough to submit. And second, what is the probability of in terms of getting the visa approved. Right. Cool. So these are the two major things we see. So yeah, I mean this is one thing. Another anxiety example I can give you is in the US interview. That is, there people freaks out the most. मेरा खुद का एक बार वीज़ा US वीज़ा. बट तू एक बात समझ रहा है ना राहुल, इसमें बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग स्टोरी सुनते हैं उसके कारण ज़्यादा फ्रीक आउट कर रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि देखो हमारे साथ जो होना है वो होना है, ठीक है, अगर मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा. बट स्टोरीज के कारण हम ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, ज़्यादा फ्रीक आउट करते हैं. बहुत मतलब सी आई हैव असिस्टेड फ्यू पीपल, लॉट ऑफ पीपल इन आउटसाइड US embassy, and I've seen them
गेटिंग अ बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स या कि सर मैं सब लाया हूँ, मतलब मैं LIC भी लाया हूँ मेरी, मैं मेरे ये FD सर्टिफिकेट है मेरे पास, मतलब उसको कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे पास कितनी FD है, उसको तुम्हें देखना है, उसके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, तुम कैसे आंसर कर रहे हो वो देख रहे हैं। US का जो इंटरव्यू लेने वाले जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, दे आर ऑल्सो ट्रेंड टू एनालाइज यू फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज, राइट right? So they are highly trained professional, they have their own internal system, and of course they search you, they try to get all the information about you quickly, they hear your purpose, they also try to verify that purpose. Someone say I'm going to attend this thing, so they do check whether this thing exists there or not, right? So ये सब कुछ चीज़ें भी होती है। so लोग बहुत ज़्यादा वैसे डॉक्यूमेंट्स वो लेके मतलब आते हैं। अपना जो वहाँ का इंटरव्यू वाला है वो बॉम्बे लोकल का टीटी की तरह है कि वो शक्ल देख के पहचान जाता है टिकट है कि नहीं। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है। तो हाँ, मतलब इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, एंड सपोज दे स्टार्टेड आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, तो उनको लगता है कि मैं उसको डॉक्यूमेंट और देते जाऊंगा ना, तो वो यार क्या बात है, कितने डॉक्यूमेंट लाए, इसको तो देना ही पड़ेगा वीज़ा, वो ऐसा ऐसा। इंडियन गवर्नमेंट का भी एक बड़ा वो है ना बैगेज कि अपने इतने डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो आपकी फाइल बन जाती है। हाँ, तो हम फाइल लेके जाएंगे तो सब कंप्लीट दिखेगा शायद। या देखो आप जैसा सीखोगे वैसे ही आगे करोगे ना, आपको नो, लगता है। दिस हैपेंस ऑल्सो बिकॉज वी हियर लॉट ऑफ स्टोरीज, ट्रू। राइट? ये गप्पे मारते मारते हर कोई, अरे आपको पता है क्या, उसके हाथ तो वैसा हुआ था, नहीं उन्होंने ना तो ये लेके गए थे ना, इसकी वजह से ही उनका वीज़ा हुआ था, मुझे पता है। जबकि पता नहीं है किसी को तो भी। तुमको यू कैन टेल एनीवन्स एक्सपीरियंस। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, राइट? सेकेंड टाइम मैं जब मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ था, उस टाइम पे मैं कुछ भी लेके नहीं गया था। फर्स्ट टाइम जब मैं कौन से वीजा की बात कर रहे हैं? US वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरा एक बार रिजेक्ट हो चुका है, हाँ। एंड आई अंडरस्टूड व्हाई इट गॉट रिजेक्टेड, एंड आई करेक्टेड इट इन द सेकेंड टाइम। सो इट्स नॉट अबाउट मनी। लोग इतना बड़ा बैंक स्टेटमेंट लेके आते हैं, देखो मेरे ये अकाउंट में ना 30 लाख है, ये अकाउंट में मेरे 10 लाख है, कुल मिला के 50 लाख का संपत्ति हो गया, अब तो मेरे को वीज़ा देना चाहिए। ग्रांटिंग अ वीज़ा इज नथिंग टू डू विथ योर बैंक बैलेंस, बाय द वे। बट इट इज ऑल्सो टू डू विद दैट, नो मतलब Not in the US. It is for Europe travel, to check whether this guy has enough money to come back, whether this guy has enough money, if something happens there, can he spend on himself, otherwise so yeah, I mean मेरा सेकेंड जो इंसिडेंस था US वीज़ा का, उस टाइम पे मैं कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं, आई जस्ट वेंट देयर रॉ, आंसर देम एंड दे ग्रांटेड मी अ वीज़ा। सो दोनों बार मैं जब गया हूँ तब मैंने देखा है कि पीपल आर ऑल्सो स्क्रीमिंग कि नो प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। पीपल थिंक कि प्लीडिंग करने से भी वो वीज़ा ग्रांट करेंगे, तो दिस इज़ नॉट द वे टू अप्रोच द इंटरव्यू। द वेरी फर्स्ट थिंग इज you should not care about the verdict. I don't give a about whether you give me a visa or not. I'm happy in my own country, it's okay, right? When you're a student, you're traveling, of course you're contributing to their economy, and there at that time you have a very strong chances of getting your visa approved, because you have paid the fees and everything. There is a proper university exists, that is there, but I'm predominantly talking about the travel use case, मतलब leisure लेजर use तूने case. बोला ना कि ज़्यादा तो प्रेडोमिनेटली वही Yeah. है। So Makes sense, हाँ, मतलब people only mess it up by their body language, because the more you're anxious, they think something is fishy, right? I don't think he's fit enough to travel. वो एक लाइन है ना, इफ यू आर सेलिंग नोबडी इज बाइंग। Yeah, तो yeah, मतलब तू Correct. ज़्यादा सेल कर रहा है, सर सर मैं बढ़िया करूँगा ये, तो वो Yeah. समझ जाता है ना सामने वाला। yeah, exactly. And plus, look, they are stationed there, whoever at the embassy. I'm assuming, obviously, I'm not known anybody, but I'm assuming most people are just checking this कि भाई जा रहा है, सही बंदा है या नहीं है, मेरी कंट्री में बुला रहा हूँ इसको, फिर ये वापस चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड फिशी तो नहीं है, विशी वॉशी तो नहीं है, बस यही चेक कर रहा है। तुम कहीं भी मुझे गलत एंगल दोगे यार, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा ना। एंड इट्स फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम दैट पर्सन डिसाइडिंग एंड आई एम द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, आई एम द गेट कीपर ऑफ दैट हाउस, सो टू से। Yeah. मैं अपने घर में नहीं घुसने दे रहा भाई, मुझे कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही है तो, और कुछ चीज़ में मतलब दे आर नॉट लाइबल टू एक्सप्लेन यू कि भाई क्या चीज़ अच्छी Yeah, लग रही है। yeah. दे माइट बी नाइस पीपल, जो फॉर्म के रिजेक्शन में भी कभी कभी रीज़न लिखा आता है,
वो रीजन का भी कोई रीजन नहीं है, मतलब कहीं भी टिक लगा के भेज देंगे, आप क्या कर लो। वो भी इसके ऊपर आई विल ऐड lot of countries, and this happens majorly in Europe. They will not give you proper explanation why your visa is rejected. Right. There are multiple selection answers. They will just tick on something and send it back आई to हैव you. सीन दैट भाई, देयर वाज वन जिसका रीजन। कोई सेंस नहीं रहेगा आपके. हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तेरे को एग्जांपल यही बोल रहा हूँ। मैं आई वाज इन यूएई ट्रैवलिंग टू कनाडा एंड दिस वाज लाइक 10-12 इयर्स अगो। और मैंने कुछ अप्लाई किया, शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया था, क्या गलत, या मतलब वो होता है ना 12 दिन कहीं लिखना होगा तो मैंने 14 दिन, कभी कभी होता है ना 13 से 14 कहीं हो तो तुम एक दिन काउंट करोगे या 2 दिन काउंट करोगे, ऐसी कुछ गलती कर दी। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कनाडा वीज़ा। उसमें कहीं रैंडम लगा दिया, उनको लगा कि उसमें लिखा था कि भाई ये बंदा वहीं रह जाएगा। मैंने बोला क्या रैंडमनेस है ये। And then I corrected the form, presented, I think within a week, and I got my visa. It had nothing to do with what they had indicated as part of my rejection. And they gave me a long duration visa also. तुम्हें इतना ही टेंशन होता तो ना देते ना मुझे। तो वो ये तो मैंने देखा है, वो रैंडम 5-10 या 4-5 जो भी ऑप्शंस होते हैं उसमें कहीं भी टिक लगा के बस वो बोलते हैं हाँ भाई ठीक है रिजेक्ट। हम बोल नहीं सकते कुछ स्पेसिफिकली। मतलब यूएस इंटरव्यू मैंने यहाँ तक देखा हुआ है कि मतलब दे- छोटे बच्चों को लेके जाते हैं एंड देर सेइंग इसको जाना बहुत ज़रूरी है, देर इज़ अ मेडिकल emergency we have, you have to grant us visa. I mean, if you go with this sort of narrative, then absolutely, see, they have basic question you need to answer, whether you will come back or not. So to prove that, you have to show your strong ties with your home country, right? So this is the one of the major reason, and of course, what is your purpose, why you are going there. So these two things, and of course you are not fishy. These few things, if मतलब you वही इंटेंट को चेक कर रहा है ना वो, कि तुम लेजर ट्रैवल बोल रहे हो तो लेजर ही है या कुछ और एंगल तो नहीं है। और इंटेंट को ऑब्वियसली सब्जेक्टिव तो एक जजमेंट रहेगा ही जो लोग रखते हैं, और जितना उसको ऑब्जेक्टिवली वो डेटा के थ्रू देख सकते हैं उसके लिए वो तुमसे मांग रहे हैं कि भाई तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट ये वो तामझाम चीज़ें दे दो, कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, रेफरेंस दे दो, ये सब मांगते होंगे। see US, everyone knows US is the land, where everyone wants to go, एटलीस्ट right? दिस इज व्हाट पीपल स्पीक No, अबाउट आई थिंक। in at some point it still is, right? हाँ Everyone wants to go there. So Mumbai has struggled with immigrants, right, from other states. There still are citizens, but still the localates had or have few problems, debatable. But they are struggling with the international immigrants. Everyone wants to go there. So imagine what sort of. So the point I was coming to is one are set of people जो कि नहीं जा पा रहे हैं. There is obviously a very small set of people जिनमें बहुत पैसा है, they just really don't care, मतलब जा रहे हैं जितना पैसा खर्च हुआ खर्च हो गया. But then there are a lot of set of first time travelers who might plan for a travel. Now planning is, as you said, one of the steps is अच्छा यार बहुत अच्छी डील मिल रही है. तो हमने we used to discuss this at CRED also, if you remember. Indians generally are deal seekers. Yeah. ठीक है, चाहे पैसा आ भी जाए ना तब भी आप डील सीकर होते हो इंडिया में. Yeah. और पैसा कम है तो वैसे ही डील सीकर हो आप, विच इज़ ऑल्सो टू डू विद हाउ आवर अपब्रिंगिंग हैज बीन. मतलब हमसे पहली जनरेशन इतनी वेल टू डू नहीं थी जितनी अब हम हैं, एंड आई एम श्योर हमारे बाद जो जनरेशन है वो हमसे बहुत ज़्यादा वेल टू डू होगी, बिकॉज दैट्स द इंडिया ग्रोथ स्टोरी. Yeah. तो जो पहली बार ट्रैवल कर रहा है उसके पास फाइनेंसिस कट टू कट है. How should they manage their travels? And probably you can speak about two different countries or two different regions. One is European travel vis-a-vis in Asia context travel. क्योंकि अगर मैं सोचा है, मेरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1000 रुपये खर्च होंगे ट्रैवल पर, हो सकता है यार आपको जाके रियलिटी बहुत अलग हो. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट कपल ऑफ थिंग्स विच माइट रिजल्ट इन टू 2,500-3 हज़ार का खर्चा रादर देन 1000 का खर्चा, और आपके पास पता चला वो ओवरऑल बैंक ही नहीं उतना, तो देन यू आर एन अ फिक्स. तो हाउ शुड पीपल प्लान अबाउट इट? व्हाट आर द बेसिक और कॉमन पिटफॉल्स पीपल गो थ्रू अबाउट देयर फाइनेंसेस हु आर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया, जो कट टू कट बजट पे चल रहे हैं, बहुत ऑप्टिमाइज्ड डील मेकिंग कर रहे हैं, एंड थोड़ी वेल्दी कंट्रीज में जा रहे हैं या डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहे हैं, विजा विज एशियन कॉन्टेक्स्ट में स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज में जा रहे हैं.
I Yeah, hope yeah, yeah. you I get I got your point. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को स्ट्रगल करते देखा है That इसमें. whatever you have spent on your travel package, at least utna to you have to keep in your bank so that you can spend it and live Okay. easily. It has to be because that the travel package is covering your major expenses. Flights and hotels are the major expenses. तो अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें 10 लाख का खर्चा है तो 10 लाख और अलग से होने चाहिए Yeah. तुम्हारे. 5 लाख का खर्चा 5 अलग होने चाहिए. Correct. Yeah, and also should have a good travel insurance if something happens because a lot of things can happen in the travel. इस पे भी आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट. तो माय क्वेश्चन इज कि जो ये ट्रैवल इंश्योरेंस वाला पॉइंट है, एज वी सेड कंप्लायंस की तरह देख रहे हैं लोग. Correct. इसको देखना कैसे चाहिए? क्योंकि देखो ये ऑनगोइंग जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है वो तो आई थिंक इवॉल्व हो गया होगा कि उसको कैसे करना है. बट अ लॉट ऑफ अस एज इंडियंस आर ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन आवर लाइफ. Even if you have done it, you've not done it that frequently. Every other time is a new experience for you. Like for example, मैं बीच में जब via you I had applied for my Australia visa and then I had gone. उसको भी 1.5-2 साल होने वाला है. Yeah. उसके बाद से 1.5 साल हो गया, उसके बाद से मैं कहीं गया नहीं हूँ. अब मैं अप्लाई करूँगा वो अलग एक होगा. मेरी वो एंग्जाइटी तो चली गई है. मैं सिंगापुर, दुबई, टोरंटो वगैरह यहाँ वहाँ तामझाम जगह यूरोप घूम लिया हूँ. ऑस्ट्रेलिया चला गया हूँ. तो दी एंग्जाइटी ऑफ गोइंग टू अ न्यू कंट्री, वो जो तूने बोला ना कि साउथ ईस्ट एशिया जाके एकदम खत्म हो जाती है, वो मेरी लाइफ में चला गई है. बट नेक्स्ट टाइम आई गो अगेन, मेरे लिए वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी ना इट विल बी अ कंप्लायंस थिंग कि हाँ ठीक है चलो. हाँ. हाउ शुड वन थिंक अबाउट इट विद हाउ डू पीपल थिंक अबाउट इट? अब सबसे पहले चीज़ तो यार to choose a travel insurance you have to see the claim settlement ratio. That is the bottom line. Which company you are buying insurance from and what's their ratio. That just solves for half of the things. And I have seen mostly all the travel insurance features are somewhere similar only. Now this is one of the product basically which we are working on right now, and we'll absolutely going to launch that very soon, where if your visa gets rejected we'll refund you the visa fees, which we feel it's a waste of money. That can we underwrite the end traveler and refund them. But yeah, I mean, coming back to the choosing a travel insurance, that these are the major points. And also if you really want to go more deeper, then you have to see what are the features and what is the budget allocated for that particular point. Like for example, if I'm buying a travel insurance $25,000, इसका मतलब ये नहीं कि $25,000 आपको मिलेंगे. हर एक डिवाइडेड रहता है, एज यू नो. हर एक पासपोर्ट लॉस के लिए कितना होगा, बैगेज लॉस के लिए कितना है. सो मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज केसेस जो है कि बैगेज कैन बी लॉस्ट, पासपोर्ट हो सकता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, या फिर मान लो कि कुछ इमरजेंसी आ गया, मेडिकल इमरजेंसी, अगर छोटे टाइम के लिए मान लो एडमिट करना पड़ा, तो उसके लिए कितना एलोकेटेड है उस पॉलिसी का बजट. दैट is something you can go more deeper. But ये services do you guys also help in to a lot of people? Yeah, we have helped in the past. Now we are introducing it as a product. ये भी तो एक एंगल ऑफ एंजाइटी है ना. मैं जैसे एज अ सेपरेट एज एन इंडिविजुअल, इफ आई एम ट्रैवलिंग, आई माइट attempt to take a travel insurance with a very compliance in first in mind कि अच्छा भाई ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी होता है अप्लाई करने के लिए. बट जब जरूरत पड़ेगी तब मेरे को एकदम से फिर वो फील होगा ना कि यार कोई करवा दे, कुछ हेल्प कर दे. तो इट मेक्स सेंस फॉर यू गाइज टू प्रोवाइड इट और रिकमेंड इट एटलीस्ट, और टाई अप विद गुड. Yeah, that's an upcoming release we'll be having, where because we already know the traveler through its document, and based on that we will definitely recommend the best available travel insurance to them. But and how many number of people are traveling, and because travel insurance you can also get a group insurance or family of 4, then how much cover you require. So if 6 people are traveling and you are just getting a cover of $25, it's not going to be sufficient if something happens. So has to be a enough cover for that. And also where you are traveling, that is also most important. मतलब यूएस में तो सब महंगा है यार, तो वहाँ पे यू हैव टू टेक थोड़ा बिगर ट्रैवल इंश्योरेंस.
higher. जनरली ट्रैवल इंश्योरेंस जो प्रोवाइडर्स होते हैं या जो सेल करते हैं, ऑल्दो लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट ट्राइंग टू डू एज आई सेड कंप्लायंस वाला, तो वो ऑनलाइन कर लेंगे, बट जनरली इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको एजुकेट करती हैं कि आपको कितने का लेना चाहिए. एक तो वो है ना, एक तो मिस सेलिंग का भी प्रॉब्लम है, तो जनता थोड़ा सा सेकंड गेस करती रहती है कि मतलब तू सच में बोल रहा है मुझे 10 लाख का कवर चाहिए या नहीं चाहिए, या जस्ट बिकॉज प्रीमियम बड़ा है तो इसको करके यू आर ट्राइंग टू सेल मी. तो आई थिंक देयर इज अ बिग ट्रस्ट प्रॉब्लम देयर फॉर श्योर, Definitely. बट so That is let तो me in try, general insurance का ही problem but है वो let me वाला. try and quantify that. Say for example, somebody is traveling to a country which is in Europe, and they're planning to spend close to 5-6 lakh rupees there. What should be their coverage look like? कितना होना चाहिए? ऐसा कुछ थंब रूल टाइप है क्या? कुछ दिमाग में रखना चाहिए? See, generally, whatever insurance we have fulfilled, insurance requirement we have fulfilled for the travelers, generally a $1 lakh is is something we recommend if a family of four is traveling. That is sufficient enough, and of course, how many number of days you are traveling, based on that also your covered क्योंकि amount मेडिकल खर्चा भी तो भाई बाहर काफी काफी मतलब है. travel insurance will have or multiple other things including travel. Yeah. Travel will become a big portion if you Yeah. go through it. Yeah. Unfortunately, when whoever goes through it. क्योंकि मतलब अगर नॉर्मल पानी खरीदने में भाई स्विट्जरलैंड में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ हॉस्पिटल में तो आपको बहुत खर्चा लगने बहुत वाला खर्चा है. है. गॉट इट. तो ये एक, दिस इज वन ऑफ द सर्विसेज यू गाइज आर स्टार्टिंग. ऑब्वियसली वीजा इज वन. Yeah. Any other things you guys are planning? Like my view is first is to understand what all are you servicing, Yeah. and given that from a 3 to 5 year horizon, what are the things do you see you will add, and what's the vision of the company? Like अब देखो अभी क्या था, sorry just to Yeah. complete the question, क्रेडिट से पहले कुछ कर रहे थे, it started like a hobby and then you guys said कि भाई बहुत सारी जनता आ गई. After COVID, obviously COVID made a big stop in it. COVID के बाद वापस चालू हो गए. Now you are bringing in. What all is current and where are you headed? I'll address this in two ways. One is what we are trying to do in India, and then what is the future of this. See, we are helping the travel businesses and also the people who are wanting to travel for multiple purposes outside. We're trying to complete their trip, the entire trip, by basically providing them multiple ancillaries, because ancillaries are something which fulfills the entire trip. मैंने फ्लाइट बुक कर लिया, मैंने होटल बुक कर लिया, दैट्स इट. ये तो नहीं पॉसिबल ना. अब ये सिर्फ बुक करके आपका ट्रिप नहीं होगा. देर आर 10 अदर थिंग्स विच यू रिक्वायर, राइट. यू ऑल्सो हैव टू ट्रैवल टू एयरपोर्ट, राइट. You also have to go to your hotel. You will end up doing multiple things in that country. You need a phone, right? You need a connectivity. We are in a hyper connectivity era, and as Airtel Jio has spoiled us with almost unlimited data. वहाँ पे बाहर डेटा फ्री नहीं होता. आई मीन यूएस पीपल दे आर जस्ट माई ब्रदर वेन एवर ही कम्स टू इंडिया ही जस्ट सरप्राइज, यार इधर क्या है, पानी की तरह डेटा बह रहा है. आई मीन दैट्स हाउ ही स्पीक्स, राइट. So there is a behavior. We want to, click a picture everywhere, and I have seen Indian travelers doing a video call, a family video call. देखो किधर आया हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये है वो है. That's how they see. So the connectivity is also a problem which needs to be solved. Uh, you know, so yeah, I mean there are 10 other things, experiences based on the likings and aspirations of a traveler, what sort of experiences is required. So can I understand it correctly in a sense that obviously visa is the initiation of the discussion, but then anything like a concierge service around your travel, you would want to fulfill it. Yeah. So yeah. of all these things, generally you will have product services which Correct. right now you're live with. So visa is one, travel you're coming out with. Anything else? See, there are multiple things we have thought. I'll just नहीं अभी current क्या क्या है मतलब current is the travel insurance I talked about, eSIM which we are targeting, Okay. where which will give them endless connectivity in their travel and worry free connectivity. कि data कितना बचा रखो, data off करो, which this is not a common behavior for us in our home country. It should continue when they go there. Okay, right? got it. So these are the current few things which we will eye. And there are few more problems which we have identified. I can talk about that as well. Like
one thing I can put across. See, one of the reason iPhone sales shot up in India is the you know multiple financing options are there. Like iPhone is a costly device. 1.5 लाख का फ़ोन आ जाएगा. सपोज अभी हमारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए नहीं है, हमें चुल मच गई कि यहाँ से निकल के अभी का भी आईफोन बाय करना है. हम कर सकते हैं, भले हमारे बैंक अकाउंट में 1.5 लाख नहीं है. वी हैव फ्यू कार्ड्स, यू कैन जस्ट स्वाइप इट एंड गेट दैट आईफोन. But what about travel package? We have to think a lot. We can't take a impulsive decision, right? In terms of finance, of course, it is there. Then can you simplify that? Can you help travelers, to help them to make that decision quickly, right? So these are also some of the problems we have identified and figuring out what needs to be done in that space as well. Got it. And one more thing which I had in mind, which I would love to understand is, given that a lot of these things require engaging with a lot of different partners who will help you solve this. Yeah. Will it eventually result in also becoming a B2C experience for a lot of people? Or will it continue to be very corporate centric as consumers? Because corporate को तूने अगर product दिया तो it is essentially B2B2C और B2B in a sense. और अगर एजेंट को दिया तो डेफिनेटली B2B2C हो गया. अगर कंज्यूमर डायरेक्टली तेरे पोर्टल को शायद पोर्टल को वाइट लिस्ट करके भी दे रहा हो, आई डोंट नो, या फिर वो B2B भी बन सकता है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट भाई मुझे भेजो एज एजेंट, सारे व्हाट्सएप कर दो या जो भी है, और फिर उसके बाद फिर मैं बैठ के बैकएंड पे किसी को बोलता हूँ अपलोड करेगा. See, in terms of strategy, we are absolutely clear. We are here to empower the travel businesses जिनके कस्टमर्स को ट्रैवल करना है अब्रॉड. दैट इज़ वी आर वेरी क्लियर. वी आर टारगेटिंग देम एंड हेल्पिंग देम टू make their travelers life easy by providing certain services, right? Now, one thing we missed in terms of ancillaries, currency is also one of the most important points, and payments. See, I keep experimenting multiple things. So in my last trip to Europe, so I traveled to Switzerland and Italy. I took a risk. एक भी यूरो लेके नहीं गया, ब्लैंक, पूरा पॉकेट ब्लैंक. आई डिसाइडेड आई विल ओनली टेक कार्ड्स. देखते क्या होता है वो देखते. लेट मी सी व्हाट आर द पेन पॉइंट्स आई विल गो थ्रू. मल्टी करेंसी कार्ड लेके गया. हाँ, आई कैश कैरी नहीं किया. ओनली क्रेडिट कार्ड. हाँ, कैश कैरी नहीं किया. ओनली माय इंडियन क्रेडिट कार्ड आई टुक. अच्छा, इंडियन क्रेडिट कार्ड. हाँ, नॉट इवन द फॉरेक्स कार्ड. Indian credit card I took, different networks, and मेरे पूरे ट्रिप में मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया. Yeah, there are few cards which were not accepted, so I gave other card. Visa वो तो इंटरनेशनल तुझे स्विच ऑन करना होगा ना. Yeah, बट प्राइस डिफरेंशियल देखो फर्क नहीं पड़ा उतना. हाँ, मेरा एक्सपेरिमेंट का मोटिव ये था कि क्या विदाउट कैश ट्रैवल किया जा सकता है क्या हार्ड करेंसी भी उतनी इंपॉर्टेंट है क्या, राइट? डिजिटल करेंसी कम ही हो गया, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में तो कमी है. नहीं. हाँ, तो मैंने देखा है वहाँ पे भी टेरिटरी है. मतलब अगर जब मैं स्विस के विलेजेस में गया वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, राइट? तो वहाँ पे नहीं पॉसिबल था. तो या आई टू टेक आउट कैश फ्रॉम ATM. बट आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस दैट वेदर द फिजिकल करेंसी इज दैट मच इम्पोर्टेंट इन दिस डिजिटल एरा. आई थिंक इम्पोर्टेंट है, बट इतनी नहीं. But given that 90% of Indians who travel abroad have their bookings done by agents and all, अब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग का एक मतलब क्या बोलते हैं, think of it like I'm a stupid guy asking a stupid question, but if 90% of the people are dependent on agents and all, and a lot of people are traveling for the first time, wouldn't they feel more secured if they are traveling with cash? Like the behavior would be like that. Behavior is absolutely there. Then how do you influence them कि भाई don't worry आप cards use कर सकते हो? No, I don't want to change that habit. अच्छा, honestly. okay, sorry, I thought it's a thought around. No, I want to try. I want to just do that experimentation, because problem ये है कि लोग फिर ज़्यादा कैश कैरी कर लेते हैं, and there is a limit to the cash. You can't carry from more than certain amount. Every country has a different rule for it. So
अगर ज़्यादा लोगे फिर यू हैव टू कैरी लॉट ऑफ कैश, देन कैश कन्वर्जन, कैश इज अ कॉस्टली थिंग, राइट? देर आर मल्टीपल पार्टनर्स कम इन बिटवीन एंड यू हैव टू पे दैट प्रीमियम, सो इवेंचुअली यू एंड अप बाइंग. भाई एक एग्जाम मेरा एक सजेशन है, आई डोंट नो इफ यू गाइस डू इट और नॉट. यू हैव एज अ वीज़ा प्रोसेसिंग पार्टनर ऑल डिटेल्स अबाउट मी. मैं अब एजेंट के थ्रू आया हूँ या डायरेक्टली आया हूँ या कंपनी के थ्रू आया हूँ, माइस के लिए आया हूँ या किसी और Yeah, चीज़ के लिए आया yeah. हूँ. माई सजेशन है जैसे ही मैं जाने वाला हूँ मेरा हो गया, यू वुड नो व्हेन आई एम ट्रैवलिंग वेयर आई एम ट्रैवलिंग. एटलीस्ट व्हाट्सएप पे ना मुझे एक स्टैम्प माई वीज़ा से एक मैसेज आना चाहिए, ये डूज हैं या डोंट्स हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड. मतलब मेरे पास वैसे ही देखो, एज पीपल हु आर डिजिटली अल्ट्रा कनेक्टेड राइट नाउ इन इंडिया, वी आर एनी वे गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस. Yeah. फालतू के मैसेज भी आते हैं, बट मुझे पता है ये स्टैम्प माई वीज़ा इज़ माई वीज़ा पार्टनर. Are they, and I trust them because I trusted them with all my documents. They ensured that visa has happened. If I can get a message from you कि भाई मुझे पता है आप टर्की जा रहे हो, टर्की के बाद आप नीदरलैंड जाओगे, नीदरलैंड के बाद जर्मनी जाओगे, जर्मनी के बाद स्पेन जाओगे, स्पेन के बाद आप इजिप्ट होते हुए इंडिया आओगे फॉर एग्जाम्पल. इस कंट्री में ये इंश्योर करना, इंजॉय करो बट ये खास चीज़ें ध्यान रखो, इस कंट्री की ये खास चीज़ें मत करना, ये खास चीज़ें कर लेना. तो हम जैसे कैन डू कैन नॉट डू, जो डूज एंड Yeah. डोंट्स प्लीज शेयर करो. जैसे फॉर एग्जांपल कैश वाली बात बोली तूने अभी. अब हो सकता है कि तूने बोला मैं इस वाली पूरी ट्रिप में देख एशिया में भी जा रहा हूँ, अफ्रीका भी जा रहा हूँ, यूरोप में भी जा रहा हूँ. व्हाई आई स्पोक अबाउट दीज कंट्रीज, आई माइट हैव वेरी वेरी डिफरेंट लिमिटेशंस टू हाउ मच कैश आई कैन कैरी इन डिफरेंट कंट्रीज. हो सकता है मैं सबसे पहले टर्की में लैंड कर रहा हूँ, 10,000 यूरोज या 10,000 यूएसडी कैरी करना इज नॉट अ प्रॉब्लम. जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ. बट जैसे ही मैं घूम फिर के अगर मान ले इजिप्ट में आया और वहाँ पे 10,000 यूएसडी इज अ बिग अमाउंट एंड आई शुडंट बी एंटरिंग, मैं बोलूँगा अब ये पैसे का करूँ क्या. सो देन आई शुड थिंक मोर प्रॉपरली. तो योर सच guidance can become real actionable inputs for a lot of travelers. So just a suggestion, Yeah, yeah, absolutely. you guys might want to think about it. मेरे दिमाग में actually while you were speaking I was thinking कि यार एक लेटर भेज सकता है, but later is I think Indians have leapfrogged to just looking everything on our mobile screens. तो एक बढ़िया आ जाएगा यार, I think, and that I think will create a lot of trust in a But lot you of know, people. you should see the lot क्योंकि of. मेरे को पता है, सॉरी जस्ट टू कंप्लीट माई पॉइंट, आई कैन सर्च ऑल ऑफ दिस ऑल्सो ऑनलाइन. पर ऑनलाइन का एक प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं है यार, अ लॉट ऑफ सर्च इज ऑल्सो थ्रोइंग मी गार्बेज रिजल्ट ऑल्सो. मुझे पता नहीं है कि इस पर ट्रस्ट कितना करूँ. बट अज्यूमिंग आई हैव लिटिल ट्रस्ट ऑन यू, मैं एनी वे आई विल ट्रस्ट योर आंसर मच मोर देन सम blog writer, although you also started by blogging. So that will be higher trust uh, data point for me to follow rather than something else which I will search on Google. Sorry, you were saying something. That's where basically travel agent comes into picture, who are always connected with them while they are on the trip. They are just a WhatsApp away, right? True. This is also one of the major reason why people prefer to book with them. Of course, they are recommended by friends and family. That's a big factor. But they are friendly neighborhood, right? They also assist you in your personal language, native language, right? Plus, you don't want to make a big transaction online, so you want someone sitting across and bargain and then do that transaction. Like buying a car, you will not gonna buy a car online. You still want to go to the showroom and experience something. Here you can just experience or his explanation about the trip, and maybe he will show some of the pictures. But yeah, I've seen this few travel and do follow this sending do's and don'ts. And yeah, absolutely, that feature is also in our pipeline where Oh, nice. which will help them, as I told you, we also have a B2B2C flow where we empower the travel business to help their end travelers. और anyway तेरा जो प्रोसेस है उसमें टाइम तो लग ही रहा है. Yeah. तो अगर मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ वाया माई एजेंट और द ट्रैवल हेल्प डेस्क, यू विल, आई एम श्योर यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप अपडेट्स कि भाई मैं कहाँ पहुँचा हूँ, क्या हो गया है. दैट विल रिड्यूस एंगजाइटी एनी वे. एंड आई थिंक एज अ final step, this is something you guys should definitely consider because then my recall will be higher, na? Yeah. Like for example, genuinely, yeah, the experience I had while applying for my Australian passport visa via Stamp My Visa was by far one of the most flawless experiences.
एंड जेन्युइनली द वे यू सेड कि वर्ड ऑफ माउथ से चलता है. मैंने भी 25 लोगों को बोला, अरे भाई ये कंपनी बहुत बढ़िया है, अगर आप जा रहे हो प्लीज़ अप्लाई करो, मज़ा आ जाएगा. यू विल फील, आई फेल्ट लाइक अ किंग. दिया दिया हो गया सब कुछ. आई डिडंट हैव टू गो एनीवेयर, देयर वाज नो फिजिकल अपॉइंटमेंट, ऑल ऑफ दैट. आई जस्ट गॉट लाइक अ 3 year थिंग. 3 year आई थिंक. It's a very trust deficit category. नहीं तो वो तो हम बात करते हैं ना Yeah. हमेशा से. फिर हम क्रेड में भी बात करते थे, अभी भी बात करते हैं कि जनरली हम इकोसिस्टम, द इंटायर इंडियन इकोसिस्टम इज अ ट्रस्ट डेफिसिट इकोसिस्टम. बट उसको आप नेगेटिवली मत लो ना, उसका पॉजिटिव देखो देखो. कि हल्का सा ट्रस्ट डेवलप करो, देन पीपल विल कंप्लीटली रिलाई ऑन यू. Yeah. लाइक कमिंग बैक टू योर ब्लॉग स्टोरी कि तूने लिखा एंड यू योर स्टोरी बाय स्टोरी बाय स्टोरी बाय स्टोरी. ऐसा नहीं है उस बंदे ने, जिस बंदे ने देखो बैंगलोर वाले ने भेजा होगा, उसने एक स्टोरी पढ़ के भेज दिया होगा. उसने 25 स्टोरी पढ़ी, 5 स्टोरी 10 स्टोरी जितने भी पढ़ी, एवरी स्टेप वाज एडिंग टू ट्रस्ट. Yeah. एंड इवेंचुअली इट रीच्ड द बेसिक थ्रेशोल्ड कि उसने बोला आई ट्रस्ट देम इनफ कि मैं अपना पासपोर्ट तेरे घर भेज दे रहा हूँ. तुझे गुस्सा आ रहा था कि ट्रस्ट ये क्यों बेवकूफ़ी करी, बट सामने वाले को ट्रस्ट डेवलप हो जाता है. इंडिया में ट्रस्ट डेफिसिट इकोसिस्टम है, बट अगेन वही वाली बात हम करते हैं ना कि एक कंपनी अगर एक बार ट्रस्ट बना लेती है तो सॉल्ट भी भेजती है, प्लेन भी बेचती है, सब कुछ, मतलब नमक से लेकर प्लेन तक सब बेच सकता है फिर वो आदमी. इट्स बिकॉज दे हैव अक्यूमुलेटेड ट्रस्ट. तो आई थिंक यू गाइज कैन ऑल्सो डू अ वेरी वेरी गुड जॉब देयर. ऑल्दो यू गाइज, And after that courier which I received, जो मैंने एड्रेस दिया था, it just completed a circle. We end up registering our company on the same address. Yeah. नहीं ठीक है, मेक सेंस. तो अभी योर ऑफिस ऑब्वियसली यू आर बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे. यू ऑल्सो हैव, डू यू हैव एन ऑफिस इन बैंगलोर एज वेल? Yeah, I live in Bangalore only. बट बॉम्बे में भी तो है ना ऑफिस तेरा? हाँ, बैंगलोर हमारा ऑफिस दिल्ली में है, अच्छा. बॉम्बे में है, बैंगलोर में है. एंड यू प्लान टू ओपन मोर सेंटर्स, लाइक क्या सीन है? Yeah, so in And is visa. it, sorry, and is it only India specific or are you planning to? Yeah, for now, of course, we are solving for Indian passport holders, and we do have aspirations to solve for other citizens as well. So, if I just talk about India, in India, 4 cities are most important cities because those are officially metros. Kolkata, Chennai, वहाँ Bombay. embassy है. हाँ, वहाँ पे embassies located है. So there, of course, you have to work with them and submit your applications over there. So, yeah, we'll be expanding in this coming quarter in these cities. So right now you are in Delhi, Bombay and Bangalore. Yeah. And you'll be opening in the other 3 metros? नहीं, कितने बचे? 2 ही मेट्रो बचे ना? Kolkata Chennai and Kolkata. Kolkata, yeah. So you'll be opening centers In there. the coming quarter, yeah, we'll be there, and we'll be able to cater to South customers as well, and East India. But since your work is also dependent on a lot of corporate working with you, a lot of corporates, any other place like Pune, I'm just thinking of different corporate centric places. Ahmedabad is a big city now. Hyderabad is another city. Yeah. Does it not make sense to probably open a sales rep office, like something like that there? So we have a very small fulfillment center in Ahmedabad. Okay. This is an experiment actually which we are doing. To address your question, we already started working on that, and we're gathering a lot of insights. How does it, affect the business and affect the service when you have a local presence in upcoming cities, right? Upcoming tier 1 cities. These are all. बट जनरली जो हमारे इंडियन ट्रैवलर्स हैं वो कौन से एरिया से ज़्यादा फ्लो आता है? अब लाइक द मतलब द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज कि बिहार की जनता ज़्यादा ट्रैवल कर रही है या महाराष्ट्र की जनता ज़्यादा ट्रैवल कर रही है? अज्यूमिंग प्रॉस्पेरिटी इन महाराष्ट्र इज हायर बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ Maharashtra and Gujarat are the dominant states. नॉर्थ इंडिया, पंजाब साइड कुछ नहीं है? Punjab side भी है, but we are only tracking the leisure travel because that's the use case which we are serving right now, leisure and business. So that is predominantly Gujarat and Maharashtra. These And thus Ahmedabad becomes like a good center to experiment. Ahmedabad is, the Gujarat story is real. Yeah. And you were saying कि you are tracking or trying to solve for Indian passport, but again, like Indian passport, there are other national passports also which are not as strong. Absolutely. We already started getting a lot of requests for other nationalities as well. Okay. And we have to reject those applications. We have to send back those applications. There are
Bangladesh passport holders, Indonesian passport holders. These are some of the upcoming markets of India. These are the next India, right? So yeah, we do have. तो वहाँ वहाँ खोलने के बारे में भी सोच रहे हो, क्या सीन क्या है, मतलब व्हाट्स द इंटरनेशनल, Yeah, as I said in the मतलब व्हाट beginning. आर द स्टेप्स यू आर प्लानिंग Yeah, as I said in the beginning, this is not an Indian problem. This is an Asian problem. So all those countries which has this problem predominantly, and the market is good enough to enter, we will be there for sure. बट हैवंट फिक्स्ड ऑन. Too early to Acha, got comment it, on got that, it, got because once we capture the India, absolutely the next, that is next in the cards. But I think this was great here. I think I wanted you to come and probably speak about the entire visa story. I think a lot of us go through grind in life and then figure out travel करते हैं. But travel के साथ भी we are anxious. There are multiple things which we plan, and I was always intrigued when you spoke about your entire story about building this company for the first time when we spoke about it. So I'll to sum this up. I can talk about travel uh, as a way of life. Why travel is important, and why travel is really important for a country like us. Because if you see our history, we have never been an explorer country, right? मतलब हम बोलते हैं कि हमें हमेशा इन्वेट किया गया. शायद तुमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया होगा, राइट? यू आर रियली हैप्पी इन व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर ओन टेरिटरी. वर्ल्ड के बिगेस्ट एक्सप्लोरर है वो इंडियंस नहीं है, राइट? इवन वास्को डी गामा हो या कोलंबस हो, राइट? युआन शुआंग या इब्न बटूटा, ऑल दीज आर नॉन इंडियन एक्सप्लोरर्स. सो सी, पहले के टाइम में ट्रैवलर्स को रिवॉर्ड किया जाता था, राइट? ट्रैवलर का जॉब ही यही होता था कि तुम जाओ दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे टेरिटरीज में, वहाँ पे लर्निंग लेके आओ, सो दैट वी कैन get insights from those learning and implement in our own territory. Abhi, in our country, we have seen we don't understand each other's point of view. A lot of time there is a because we don't know their point of view, we build some sort of perception about other community or other state person, any person who has a different point of view. Once you travel abroad and when you see the other sensibilities, you start getting more liberal. Your thoughts gets more liberal, and you become more your acceptance level Inclusive हो जाता है. it increases. And that, I believe, the more people travel, the world peace will increase, because we start understanding the other point of view, and we start loving people more if we start traveling. I remember my first marriage anniversary. Everyone basically plans for a big फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो मैं एकदम बहुत बढ़िया सा कुछ तो एकदम लग्जरियस बुक करूँगा, फिर बलून डालूंगा उसके अंदर, फ़ोटो खींचूंगा, ऐसा वगैरह, कि हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी. बट वी नेवर डिड दैट. रादर वी बुक अ हॉस्टल इन गोवा, एंड for 5 days I roam with multiple people, who includes there was one Iranian guy, one Britisher, one Russian was there, few tier 2 Indian boys, one Nepali, right? We were just roaming and discussing about multiple topics, multiple things, and all that discussion was so enlightening. We started understanding each other's point of view. There was a Britisher, who told us that they don't teach us the colonial history, right? By coming here, by exploring, he started understanding kahan gand machai gayi hai, right? So that's how travel just helps you to show the ground reality. And I think the growing country like us, we should travel. That is gonna help us a lot. And your company essentially is helping a lot of people travel better, faster, in a more efficient manner. So thanks a lot, bhai. Thanks for Yes. doing this, and I hope more power to you. And अगली बार जहाँ जा रहा हूँगा तो you would know about it. Thanks for having me. Thanks for watching the video. If you like the video, please press the like button, subscribe if you like it, and if you can share it with your friends, I'll be really happy about it.
We are working really hard to make good videos, and hopefully future videos will be as exciting as the one you just saw. Thank you.